I welcome you all in the next video tutorial of pharmaceutical jurisprudence. So dear all, in this video we are going to cover a simple topic of code of pharmaceutical ethics. As you can see, we have divided this into specific parts for the better understanding. Number one, the code of pharmaceutical ethics in relation to his job, in relation to his trade, in relation to his profession, and also the medical profession is there. And it is divided into different subcategories. Like in relation to his job, again divided into different categories like scope of pharmaceutical services, conduct of pharmacy, handling of prescriptions. Don't worry, we will do these all one by one. And in relation to his trade, divided into price structure, fair trade practices, purchase of drugs, hawking of drugs, advertising, and displays. As you can see again, code of pharmaceutical ethics in relation to his job, in relation to his trade, profession, and of course the medical profession is there. So first of all, difference between ethics and law. We know ethics are the moral principle, whereas the law, these are a set of rules and procedures which we all bind. So again, code of pharmaceutical ethics, 4 parts: relation to his job, trade, profession, and medical profession is there. So first of all, pharmacist in relation to his job. Suppose if we talk about the scope of pharmaceutical services, so whenever there is a premises, so it should have all the facilities should be there. So when a premises is registered under the different requirement and opened at a pharmacy, a reasonable comprehensive pharmaceutical service should be available and provided. And this involves the supply of commonly required medicines at all times without any delay. And also involve the willingness to produce or the furnish emergency supplies at all time. Second part is the conduct of pharmacy. Suppose the pharmacy medical store is there, so we have to avoid the contamination or the cross contamination. So adequate facility should be there in the pharmacy. The condition in the pharmacy should be such as to preclude avoidable risk or errors of accidental contamination in the preparation, dispensing, supply of medicine. It should be considered. Second point, the appearance of the premises should reflect the professional character, so it should be as per the norms. It should be clear to the public that the practice of pharmacy is carried out in the establishment, and different signages, notices, description, different symbols should be there for proper identification. If you talk about the handling of prescription, so whenever a prescription presented for dispensing, it should be received by the pharmacist without any discussion or commenting over it regarding the merits and demerits of the therapeutic. But here, pharmacist must see if there is a chance of any correction, so he should instantaneously tell the practitioner to correct it. So I'm not saying that pharmacist has the right to do so, but it has a right to intervene in the prescription also and told the registered medical practitioner about the correctness of the prescription. So pharmacist should not even show any expression of his face of alarm or astonishment upon the receipt of the prescription. So as such may cause anxiety in patient. तो patient के सामने pharmacist को we have to be calm, composed. But if in case of any error, he should report to the registered medical practitioner. Next, pharmacy in relation to his trade. Price structure. We know price structure fluctuates from day to day basis. So it is the responsibility of the pharmacist to provide the drugs at the adequate price, at the reasonable price to the patient. So prices charged from customer should be fair and keeping with the quality and the quantity of the commodity supplied and the labor and the skill required in making it ready to use. And fair trade practice should be there. No attempt should be made. सपोज करिए 2 मेडिकल स्टोर है और एक मेडिकल स्टोर वाला दूसरे मेडिकल स्टोर को गिराने की कोशिश कर रहा है। गिराने की कोशिश कर रहा है का मतलब क्या है? उसकी प्राइसेस को इफेक्ट करे। तो इस तरह का काम ना करें। वी नो कंपटीशन एक्ट के हिसाब से हमें मार्केट पे हमेशा फेयर चलना है। तो नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय कट थ्रोट कंपटीशन. Second point, in case of any order of prescription generally intended to be served by some dispensaries bought by mistake to another, the latter should refuse to accept it and should direct the customer to the right place. अगर ऐसी अवस्था में गलती से कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ चुकी है जो कि किसी और डिस्पेंसरी पे जानी चाहिए, तो it is your responsibility to tell the patient or the particular person to go that particular area. So label, trademark and other symbols and signage of the contemporary should not be initiated or copied. आपको ध्यान रखना है, कॉपीराइट एक्ट हम पढ़ चुके हैं और ट्रेडमार्क सिंबल्स आपको किसी भी अवस्था में किसी भी कॉपी नहीं करनी है. परचेज ऑफ ड्रग शुड ऑलवेज बी परचेज फ्रॉम अ जेन्युइन सप्लायर. तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया. और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO अप्रोच आपको यूज करनी है. जो चीज पहले आएगी उसको आपको पहले ही निकालना है ताकि एक्सपायरी डेट से हम बच सके. हॉकिंग ऑफ ड्रग्स आपको अवॉइड करना है. आपको हॉकिंग ऑफ ड्रग शुड एट द मेडिसिन शुड नॉट बी इनकरेज. So this is very important. A self-service method of operating pharmacies and drugstores should not be used, as this practice may lead to the distribution of therapeutic substances without an expert supervision. तो इसको भी आपको avoid करना है. Next,
अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले शुड बी अवॉइडेड। और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी एडवर्टाइज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्लेम करती है, फॉल्स क्लेम करती है डिजीज के बारे में, तो उसको आपको उसी समय रिपोर्ट करना है। तो नो डिस्प्ले आइदर ऑन द प्रेमिसेस, in the press or elsewhere should be used by the pharmacist in connection with the sale to the public of medicine or medicinal appliances which is undignified in the style contains any offer about the refund of money। आपको इसी से बचना है। मिसलीडिंग और एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ क्लेम, आपको ये मान लीजिए कोई दवाई है वो क्लेम कर रही है कि कैंसर ठीक कर रही है, लेकिन वो एक फॉल्स क्लेम है, कोई भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं हुई है, तो वो आपको उसी से बचना है। Next, pharmacy in relation to his profession, yes, he should maintain the standard of profession. He should help the fellow pharmacists in emergency need. He should try to weed out corruption in the profession and the society. He should keep up to date. The pharmacist को हमेशा up to date knowledge होना बहुत जरूरी है, and fair knowledge and laws related to profession उसको पता होने चाहिए। अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो किसी भी अवस्था में फार्मासिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ किसी भी तरफ से उलझेगा नहीं। मतलब लिमिटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल और द प्रोफेशनल एक्टिविटीज, फार्मासिस्ट अंडर नो सर्कमस्टांसेस टेक टू द मेडिकल प्रैक्टिस डायग्नोसिस ऑफ द ड्रग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी का काम है, फार्मासिस्ट का नहीं। तो आपको किसी भी अवस्था में डिजीज को डायग्नोज नहीं करना है और ना ही ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। एंड इन इमरजेंसी ही कैन गिव फर्स्ट एड टू द पर्सन, वो डिपेंड करता है, बिल्कुल दे सकता है। शुड नॉट रिकमेंड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। व्हाट इज दिस क्लैंडस्टाइन arrangement? No pharmacist should enter into the secret arrangement or contract with the physician to offer him any commission or any। इस तरह का करप्शन से हमेशा बचना है। लाइसेंस विद द पब्लिक, हमेशा एक पब्लिक के साथ एक गुड कॉर्डल रिलेशनशिप बना के रखना है, और अपडेट नॉलेज बड़ा जरूरी है फार्मासिस्ट के लिए, लगातार उसको अपना नॉलेज को अपडेट करना है। तो दिस इज अ टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन रिलेशन टू हिज जॉब, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, in relation to his trade, price structure, fair trade practices, purchase of drug, hawking of drug, advertising and displays। एक बार रिकॉल कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल में स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द प्रेमिसेस रजिस्टर, अगर कोई भी भवन रजिस्टर हो चुका है जो कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम है, तो उसकी जितने भी नॉर्म्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और इट शुड हैव द प्रॉपर सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट ऑल टाइम्स। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल फार्मेसी में किसी भी मेडिकल स्टोर में क्रॉस कंटेमिनेशन या कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए देयर डिफरेंट एडुकेट अरेंजमेंट शुड बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यस, अच्छे से हैंडल करना है फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अगर सपोज करिए एरर की गुंजाइश है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, बता सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, बट अपने आप प्रिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करेंगे। अगर ट्रेड की बात करें तो प्राइस स्ट्रक्चर हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आपने बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे ड्रग्स को ही आगे सप्लाई करना है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी है, अपना बिजनेस तो अपने रन करना ही है, लेकिन दूसरे बिजनेस को भी हैम्पर नहीं करना है, किसी दूसरे इंसान के बिजनेस को हैम्पर किए बिना। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ड्रग आपने जेन्युइन सोर्स से लेना है। देन हॉकिंग ऑफ ड्रग बिल्कुल नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले, अगर कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है तो उससे भी आपने बचना है, और उसकी रिपोर्ट भी आप लोग आगे कर सकते हैं। प्रोफेशन की बात करें, बिल्कुल हमें साउंड रहना है, अपने प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, और नॉलेज को अपडेट हमेशा करना है। अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो बिल्कुल हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ किसी भी तरह की बहस में इन्वॉल्व नहीं होना है, डायग्नोसिस नहीं करनी है डिजीज की, हमें ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमारा काम है डिस्पेंसिंग का। एंड इफ देयर इज अ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है किसी भी तरह का इंटरवीन, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ मिलकर ही हम हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी तरह का अरेंजमेंट में नहीं पड़ना है, इस करप्शन की एक्टिविटी से हमें बचना है। So thank you all for your valuable time. In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. This is for education purposes only. There is no commercialization involved.